गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सभी को जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय फ्रेंड्स, माय रिलेशंस, whosoever आर देयर। विषय वही, बात वही, अंदाज दूसरा। भारत वो देश विश्व का इतना बड़ा जिसकी पॉपुलेशन विश्व की 1/6 लोकतांत्रिक देश माना हुआ संसार में। लोकतंत्र जो लीड करना चाहिए दूसरों को, क्या हम लीड कर रहे हैं? क्या हमारी बातों को माना जा रहा है दुनिया में? हम सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं अपने आप को विश्व के अंदर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है लोकतांत्रिक देशों में। इसका मतलब ये भी होता है कि भारत को उन सभी लोकतांत्रिक देशों को आगे लेकर चलना चाहिए जो लोकतांत्रिक हैं। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? हमारा देश जो 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी पाया, स्वतंत्रता पाया, कई सौ साल के बाद, कई सौ साल से पहले मुगल थे और उससे पहले कौन थे आप सबको पता है। हमारे देश में कुछ लोग जो 2500 से 3000 साल पहले आए इस देश में, बहुत से पंडित भी होंगे, बहुत से दूसरे भी होंगे जो इस देश में आके बसे। उसके बाद मुगल्स आए और फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज आए थे व्यापार करने, व्यापार करते करते वो हमारी भावनाओं का भी व्यापार कर गए, हमारे समाज का भी व्यापार कर गए, हमारी शक्ति का भी व्यापार कर गए, हमारी स्वाभाविकता का भी व्यापार कर गए और हमारी आत्माओं को छलनी कर गए। हम पर राज किया उन्होंने। सारे देश पे तो नहीं किया लेकिन काफ़ी जगह किया, और आज भी हम उन्हीं की मानसिकता में जी रहे हैं। जो किस बात का होता है, जिस भी तरह से हमने उनसे, हमारे पूर्वजों ने उनसे स्वतंत्रता प्राप्त की, शराफत दिखा के, धौंस दिखा के, जैसे भी ली 1947 में। हमारा देश तब भी बटा हुआ था ऐसे लोगों के हाथों में जो स्वतंत्रता चाहते थे, शांति से अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे, उन्हें भगाना चाहते थे, और ऐसे लोग भी थे जो उनके जूता पालिश करके शांति से रहना चाहते थे। दोनों तरह के लोग थे और भी तरह के लोग थे। लेकिन स्वतंत्रता कोई खराब में नहीं मिलती है, कोई मुफ्त में नहीं मिलती है। स्वतंत्रता के लिए, प्राप्ति के लिए, आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और हम लोगों ने दिया। वो लोग व्यापार करने आए थे यहाँ पर, सबको पता है। व्यापार करते करते वो हम पर रूल कर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले से, और उससे भी पहले वो लोग यहाँ आए, धक्के मार के जिनको निकाला गया था अंग्रेजों ने अपने देश से, वो यहाँ के राज करने लग गए। और वहाँ के महाराजा ने लिख दिया कि जाओ वहाँ पर राज करो, बियॉन्ड सीज जाइए, अगर वहाँ पर आप बिजनेस कीजिए, मर्केंटाइल कीजिए, नहीं तो करते करते अपने रूल्स भी बनाइए, चिंता ना कीजिए किसी बात की, हम आपके पीछे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में बनी थी। हम लोग उस समय से सफ़र करते करते 1947 तक आए, और उस बीच में हमारे ही कुछ लोग थे, जिसे कहते हैं घर के भेदी लंका ढाए। हमारे ही कुछ लोग, जिसको आरएसएस कहा जाता है आज की तारीख में, उस टाइम भी होते थे, और वो लोग नहीं चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले, इसीलिए वो देश के विरुद्ध काम करते थे। उस समय से आरएसएस वालों ने, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, देश के विरुद्ध काम किया था। वो नहीं चाहते थे, गांधी जो चाहता है या दूसरे जो चाहते हैं, या देश की जनता जो चाहती है उनको देश को स्वतंत्रता मिले, वो चाहते थे मिले तो उनको मिले, जबकि वो कुछ करना भी नहीं चाहते थे, करते भी नहीं थे, लाई भी नहीं करते थे। उनकी हमारी सूचनाएं उनको देते थे, और वो आज़ादी भी चाहते थे अपने लिए, सब कुछ चाहते थे अपने लिए। किसी भी तरह से आज़ादी मिली, देश आज़ाद हुआ 1947 में। वहाँ पर एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया 2 हिस्से बनाए गए। आप सबको मालूम होना चाहिए, नहीं है तो बता देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमेन बनाए गए, उसके अंदर एरियाज मेंशन किए गए कि 2 देशों को हम छोड़ रहे हैं, इस देश के 2 करके हिस्से हम आपको दे रहे हैं, एक का नाम भारत है और एक का नाम पाकिस्तान है। आप इसमें जो भी है चला जाए, जो राज्य जाना चाहता है जाए, जिसके लिए चाहे। ये फैसला उस टाइम हुआ था। उसके बाद यूनिफिकेशन होना जरूरी था, जो जिस देश में जाना चाहता है जाए, भारत में जाना चाहता है भारत में जाए, पाकिस्तान में जाना चाहता है पाकिस्तान में जाए, ऐसा फैसला हो चुका था।
और उसके बाद बहुत कुछ हुआ। उस टाइम कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इस तिरंगे झंडे को नहीं मानते। आप किसको मानते हैं? हम तो साफरन कलर को मानते हैं, हम तो हिंदू लोग हैं या वैदिक लोग हैं, हम तो उसी कलर को मानेंगे जो हमारे धर्म का होगा। हम इस देश को सेकुलर भी नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष भी नहीं मानते, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। उनका मानना था या नहीं मानना था, सवाल वो नहीं है। वो करते कुछ नहीं थे, किया कुछ भी नहीं इन्होंने। आज़ादी में कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, योगदान नहीं रहा, कहीं भी उनका कोई मरा नहीं, सेक्रीफाइस किसी ने दी नहीं। और वो चाहते सब कुछ थे कि हमें मिल जाए, हमारे कहने से इस देश का राजतंत्र चले, इस देश में जो कुछ हो हमारी मर्जी से हो, लेकिन करना कुछ नहीं हराम की चाहिए थी उनको। यही कहना पड़ेगा। आपने किया कुछ नहीं, आपने शक्ति लगाई नहीं, आपने कोई सेक्रीफाइस दी नहीं, बलिदान दिया नहीं। आप चाहते थे देश आपके हिसाब से चले, जो कि पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान बना था, बन गया था। भारत बना भारत के लिए, पाकिस्तान बना पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में बहुत से लोग थे जो वहाँ नहीं रहना चाहते थे, हजारों साल से वहाँ रहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे। वो उनकी देशभक्ति उनके साथ है। जब हजारों साल से आप वहाँ रह रहे थे तो रहते रहते, किसने आपको रोका था वहाँ से आने का? वो किसने कहा था आप वहाँ से आइए? लेकिन वो आ गए, कोई बात नहीं, उनका स्वागत किया गया, उनको सारी सुविधाएं जो बन सकती थी उस टाइम दी गई। और वही लोगों ने बाद में आके एक पार्टी का जन्म किया, उस पार्टी का नाम था जनसंघ। वास्तविकता में जनसंघ उन्हीं लोगों की पार्टी बनी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर उस टाइम आए थे। ज़्यादातर वो पंजाब से, सिंध से, कराची से, जहाँ से भी आए थे, उन्होंने आके यहाँ एक दल बनाया जिसका नाम जनसंघ था। और बाद में वही भाजपा बनी, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ सवाल पार्टी की बुराई या हिस्ट्री बताने का नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो नहीं जानते हिस्ट्री भारत की क्या है, इतिहास क्या है, उनको पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। आज जो लोग कूद रहे हैं सत्ता में बैठ के कि हम हैं इस देश के मालिक, हमें वोट मिला है, वो भूल जाते हैं कि यह किसके कारनामे की वजह से आपको मिला है। अगर आज भारत स्वतंत्र है तो आपकी वजह से नहीं है, सत्ता में बैठे लोगों, ये उन लोगों की वजह से जिन्होंने बलिदान दिए, भारत की जनता ने बलिदान दिया है। और आप ज़्यादा चौड़े मत होइए, क्योंकि आपने देश के लिए कुछ किया नहीं था। आपको सत्ता मिल गई, गलती से मिल गई, सही मिल गई, लोगों की भावना से मिल गई, वो एक अलग बात है। भावना में भाना आपको आता है। उस टाइम भी आपने बहुत उल्लू बनाया था पब्लिक को, पब्लिक आपकी बातों में नहीं आई थी। आप लोगों ने तो माफिया लिख लिख के दी थी अंग्रेजों को कि हमें जेल से बाहर करो, आप तो वही लोग हो ना। कांग्रेस वाले ने तो किसी ने माफी लिख के नहीं दी थी, गांधी की किसी आदमी ने माफी लिख के नहीं दी थी, सुभाष ने माफी लिख के नहीं दी थी, किसी और ने माफी लिख के नहीं दी थी। सुभाष छोड़ के चले गए थे कांग्रेस को, हम जानते हैं, लेकिन कहाँ गए थे? हिटलर के पास गए थे, उन्होंने भी ठीक नहीं किया था। हिटलर के पास जाना क्या सही बात थी? यही लोग हिटलर का भी समर्थन करते थे, यही लोग ज्यूस का भी समर्थन करते थे। देखिए दोगले लोग किसे कहते हैं आप। हिटलर का समर्थन करना क्या अच्छी बात थी? इन्होंने किया। ज्यूस का हिस्सा अलग बात है, ज्यूस का समर्थन इन्होंने क्यों किया, उसका जवाब तो यही दे सकते हैं। ज्यूस जो आज की तारीख में फलस्तीन को मार रहा है बुरी तरह से, जबकि फलस्तीन की जमीन भी खा के बैठा है, फिर भी उसको पीट रहा है और अपने आप को वो उनको आतंकवादी कहता है, जबकि आतंकवादी खुद। खैर हमें ज्यूस से और उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे देश का मामला नहीं है। सवाल ही उठता है आज जो लोग सत्ता में आ गए, बैठ गए, बीजेपी वाले, जिसको मोदी की बीजेपी कहा जाता है, क्या कहें उसको। आप सत्ता में आए, ठीक है, आप आ गए, 2014 में भी आए, उससे पहले वाजपेयी जी के टाइम से भी आए, और अब भी आए, आप सत्ता में आ गए, बहुत खुश हैं आप। पर आप ये नहीं जानते कि झूठ का मुखौटा ज़्यादा नहीं चलता, झूठ का नाम ज़्यादा नहीं चलता, सच्चाई बाहर आई जाती है कभी ना कभी, और आएगी। आज आप जिस नशे में हैं वो नशा ज़्यादा चलेगा नहीं, उतरेगा एक दिन। आपने जिस चोरी डकैती से ये जीता है जंग, इस चुनाव की, सब जानते हैं। आप कभी बताएंगे नहीं, लेकिन आपके बताने से सच्चाई छुप नहीं सकती है। हम जानते हैं आपने क्या करके ये जीती है जंग। भारत की जनता वैसी परेशान थी, अपनी प्रॉब्लम्स में थी, वो आपको क्यों जिताती? आज आपने जितने इंडस्ट्रीज लोगों को ऊंचा उठाया, भागने दिया देश छोड़ के, लाखों करोड़ लोग रुपए लेके यहाँ से भाग गए, लाखों करोड़ रुपए लेके। आप ही के आदमी, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के लोग मिले जुले आपसे लोग, मोदी करने वाले लोग, वो भक्त जो मोदी करते हैं, भूल जाते हैं कि मोदी के कई नाम है आज की तारीख में। मोदी के नाम वो भी हैं जो कहते हैं देश से भागने दो, मोदी के नाम वो भी हैं बैंक को लूटने दो, ले जाओ। मोदी के नाम बहुत सारे हैं। मोदी के नाम आज की तारीख में ये भी है कि 233 क्रिमिनल्स को लोकसभा में भिजवा दिया जाए। मोदी के नाम आज ये भी है कि इलेक्शन में ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाए
जिनकी ब्लैक हिस्ट्री हो वो हिस्ट्री शीटर हो। बिना इसकी मर्जी से कौन खड़ा हो सकता था, अब आप समझते हैं अच्छी तरह से। भक्तों में तो दिमाग नहीं होता, इसलिए भक्तों के बारे में क्या कहें, उनका एक ही दिमाग है, मोदी मोदी और मोदी मोदी। लेकिन हम मोदी मोदी का मतलब समझते हैं। मोदी मोदी के बहुत से मतलब होते हैं। मोदी मोदी के मतलब होते हैं किसी भी तरह से जनता के वोट ले लिए जाएं, वही मोदी मोदी है, और मोदी मोदी का कोई मतलब नहीं है। मोदी मोदी का मतलब उस टाइम RSS था, जब आज़ादी की लड़ाई थी, उस टाइम मोदी नहीं था। उसके बाद जितने भी कांड हुए, देश में जितनी प्रॉब्लम्स आई, इन्होंने देश का कभी साथ नहीं दिया। इंदिरा गांधी से डरते थे, लेकिन उसका भी अपोजिशन करते थे, उसका भी विरोध करते थे। इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया, उसका विरोध इन्होंने किया। इंदिरा गांधी ने राजाओं के पैसे हटाए, राजाओं के पर्स को काटा, उसका भी इन्होंने विरोध किया। भाई क्यों किया आपने विरोध, क्या आवश्यकता पड़ी थी आपको, इसका कोई उत्तर नहीं होता है। आज भी ये बैंक उसी हालात में लेकर चले गए हैं, बीजेपी वाले बैंकों को वहीं लेकर चले गए हैं कि किसी भी तरह से बहाना बनाया जाए और बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर ये चाहते हैं अपने दोस्तों को पैसा देना। मुझे कुछ ऐसे जानकारियां भी मिलती हैं इंटरनेट पे, जैसे कहते हैं जी ये लोग जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये लोग नौकरी दे रहे हैं, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए। अरे भाई नौकरी कहाँ से ला रहे हैं आप, अपने घर से ला रहे हैं। आप नौकरी विदेश से लेके आ रही है, उनको दे रहे हैं। आप बैंकों के पैसे ले लेके खा गए, हजारों करोड़ रुपए आपने बैंकों से लूटे बिना अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन भी होते थे, हम मान लेते हैं आपने अनसिक्योर्ड लोन लिए। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब जानते होंगे, ब्रांड के नेम पे लोन दिए जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि पैसा वापस कहाँ से आएगा। इनको लोन दिए गए, ये कोई खुदाई करके पैसे नहीं कमा के लाए थे, मेहनत करके मजदूरी करके पैसे कमा के नहीं लाए थे। भारत के पब्लिक का पैसा जो बैंकों में होता है, इन्होंने लेकर बिना किसी सिक्योरिटी के उससे बिजनेस को आगे बढ़ाया। बहुत से तो लेके पैसे ही भाग गए, कोई काम करने की आवश्यकता क्या, हम पैसे ऐसे ही लेके चले जाते हैं। कांग्रेस पे तो आरोप लगते थे कि कांग्रेस के लोग पैसे लेके खा गए, कमीशन खा गए, ये करके चले गए, वो करके चले गए, आरोप लगाते थे। वफर से आज तक आरोप लगते आए, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। लेकिन इनके सबूत तो सामने है। ये तो कहते हैं काम करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे लेके चले जाओ, क्यों काम करते हो, चले गए। नीरव मोदी चला गया, चौकसी चला गया, और बहुत सारे 36, 37, 40 लोग चले गए। कोई अता पता नहीं, किसी का ड्रामेबाजी चलती रहती है। कोर्ट में उसकी अपील गई, लंदन के कोर्ट में उसकी, वहाँ लगी ड्रामेबाजी चलती रहेगी, और तो सरकार ही इनकी दोबारा वापस आ गई है। चाहे वो गलत तरीके से, ये कैसे भी आ गई है, 233 गुंडों के साथ 542 लोग चुन के आ गए। आधी 55% तो लोकसभा है, और 45% अभियुक्त सभा है, अपराधी सभा है। कैसी सभा है, क्या सुंदरता है हमारी लोकसभा की। 55% लोग तो सही वो हैं जो चुन के आए हैं, और 45% वो है जिनके नाम हिस्ट्री में है, जिनके ऊपर FIR है, उनके ऊपर चार्जशीट है, वो लोग हमारी सत्ता में बैठे हैं। क्या भाग्य बनेगा हमारे देश का, क्या भाग्य बनेगा हमारे युवा का, क्या भाग्य होगा इस देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्या भाग्य होगा इस देश के बैंकों का, क्या भाग्य होगा यहाँ के समाज का, क्या भाग्य होगा दुनिया में हमारी इज्जत का। हमारी इज्जत का खिलवाड़ टूट चुका है। पहले ये किसका फर्ज था जानना, हम नहीं समझते क्या। जिस पार्टी के भी वो लोग हों, ज्यादातर भाजपा के ही होंगे। या भाजपा को दिखता नहीं था, कांग्रेस को दिखता नहीं था, दूसरी पार्टी की आंखें बंद थी कि किस तरह के लोग हमने उतारे हैं। मैं इसमें सभी का दोष दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा दोष भाजपा का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के लोग हैं। अरे आप क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम क्रिमिनल्स को बिठाते हैं लोकसभा में? कितने शर्म की बात है, गैरत की बात है, हमें आंखें झुक जाती हैं। हम विश्व में कोई हमसे बात करेगा कि आपकी पहली सभा है दुनिया के अंदर जहाँ इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, हम उसका क्या उत्तर देंगे? कोई युवा सोचता है इस बारे में, कोई दूसरे लोग सोचते हैं इस बारे में? अरे आपका इतना भी दिमाग नहीं था कि आप वोट कम से सही आदमी को देते। आप मोदी के नाम पे वोट क्यों देना चाहते थे, और राहुल के नाम पे क्यों देना चाहते थे? आपको शर्म आनी चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं। आपको दिमाग काम नहीं करते, आप देश के बारे में नहीं सोचते थे, आप मोदी और राहुल के बारे में सोचते थे। कितने दुख की बात है। हमें ना कांग्रेस से कुछ लेना है, भाजपा से कुछ लेना है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमें देश से लेना है। हम देश के नागरिक हैं, देश का हमारा भी उतना हक है जितना आप सबका हक है। भारत देश है, मोदी देश नहीं है। भारत देश है, राहुल देश नहीं है। भारत देश है, मायावती या कोई और देश नहीं है। देश मैं हूँ और देश आप है। हम सब मिल के भारत को बनाते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। हम इस देश में पैदा हुए तो इस देश के नागरिक हैं, हमारा हक बनता है इस बात को करने का, और हम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, उसे हक से कर रहे हैं। हम जब वोट देने जाते हैं, हम क्या सोचते नहीं है किसको वोट देना चाहिए? हम क्यों सोचते हैं कि मोदी को दें या बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें? हमारे को इतना दिमाग काम नहीं करता है। लिख लिख के मैं थक गया, क्या 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 थक गया। कृपया करके ऐसे वोट मत दीजिए। देखिए उम्मीदवार कैसा है, उसकी क्या हिस्ट्री है, कितना पढ़ा लिखा है या नहीं है, कितनी चोरी की है, डकैती डाली है, सब देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा, भावनाओं में बह गए। क्योंकि भावनाओं में बैठे हैं ऊपर लोग, जो भावना भाना आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपके दिमाग को ताला लगा देते हैं, आपके मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी बातों में आप आ जाते हैं, वोट दे देते हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा। आप पढ़ा लिखा आदमी की वोट आंख बंद करके दे के आता है, उसमें मोदी मोदी का नारा लगाता है, वोट दे के आता है। कितने शर्म की बात है। मोदी मोदी का मतलब क्रिमिनल को लोकसभा में भेजना भी हो गया। मोदी मोदी का मतलब बैंकों से डकैती कराना भी हो गया। मोदी मोदी का मतलब सब कुछ रेप कराना भी हो गया।
क्या मोदी के बहुत सारे मतलब हो चुके हैं देश में? आज हाल ये है कि देश का बेहाल हो गया। इकोनॉमी की व्यवस्था देख लीजिए, हालत देख लीजिए, आर्थिक स्थिति देख लीजिए, क्या हाल है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आज आप देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, जबकि 5 साल से सरकार में एम्प्लॉयमेंट कितने नीचे जा चुके हैं। और ये बातें करते हैं कि हमने बहुत स्टेबिलिटी लाई है, हमने राष्ट्रीय भक्ति किया है। आप राष्ट्रीय भक्ति की बात हमसे करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात हमसे करते हैं, जिसने राष्ट्र के बारे में 1947 में भी नहीं सोचा, 1925 में भी नहीं सोचा। आप हम सिखाएंगे राष्ट्रीय भक्ति क्या होती है? आप पाठ सिखाएंगे जो राष्ट्र को जिताना भी नहीं चाहते थे, राष्ट्र को आज़ादी भी नहीं चाहते थे, आप हमें राष्ट्रीय भक्ति सिखाएंगे? पहले आप खुद सीख लीजिए राष्ट्रीय भक्ति, उसके बाद बात कीजिए हमसे। आप ईवीएम की चोरी कराएंगे, ईवीएम रिप्लेस कराएंगे और हमें राष्ट्रीय भक्ति सिखाएंगे? 20 लाख ईवीएम आप खा जाएंगे और हम राष्ट्रीय भक्ति सिखाएंगे? प्रधानमंत्री महोदय जी, आप बताइए कहाँ है 20 लाख मशीनें? आपका क्या उत्तरदायित्व नहीं जानने का? आपका भेजा हुआ आदमी ईसी कुछ नहीं कह रहा आपको, इसका मतलब हम नहीं कहेंगे? आपने 20 लाख मशीनों की चोरी की है, डकैती दी, उनका इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया, चाहे हम बात नहीं करेंगे आपसे। और फिर आप कहते हैं हम राष्ट्रीय भक्त हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त होते हैं, ऐसे राष्ट्रवाद होता है? ईवीएम की चोरी का चाहे लोकतंत्र को चोरी कर ले, अपने आदमियों को, क्रिमिनल्स को बैठा दिया जाए सत्ता मिलाकर। सत्ता से भी ऊपर होते हैं, एमपी सत्ता से ऊपर होता है, तो हम पूछेंगे नहीं आपसे। आपने पैसे दिलवा दिए, आपने बहुत पैसे दिलवा दिए उन अपने दोस्तों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने, आपने राफेल के अंदर भी 30,000 करोड़ के एग्रीमेंट को दिलवा दिया, बहुत सी चीज दिलवा दी। और आप कहते हैं आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवाई। किनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाई? जब ताकत है आपके दोस्तों में, जाएं अमेरिका में, जाएं इंग्लैंड में, जाएं वहाँ जाकर बिजनेस करके दिखाएंगे कितना कमाते हैं वहाँ जाकर। हमारी गरीब जनता, हमारी सस्ती जनता, इनको मिल गई और ऐठ दिखाते हैं ऊपर से कि हमने आपको रोजगार दे दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप हमारी वजह से कमा रहे हैं, हम आपकी वजह से नहीं कमा रहे हैं। भारत है ये, यहाँ पर बहुत कुछ सस्ता मिलता है इसलिए आपने खरीद लिया। जाइए ताकत है, इंग्लैंड में जाइए, कारपेंटर को 100 पाउंड रोज दीजिए। आप अमेरिका में जाइए, खर्चा कीजिए, पता लगेगा आपको कितना इन्वेस्टमेंट होता है, आपको वहाँ कौन पैसा देता है मालूम चल जाएगा। हमारा ये पैसा खाकर हमें आप तान दिखाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे बैंक का लूट कर पैसा आप बिना किसी गारंटी के लोन लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अरे हमारे पैसे से आप बने आगे, आपको झुकना होगा हमारे सामने। हम आप हमारे को बैठ नहीं सकते क्योंकि पैसा हमारा है, नुकसान हमारा हुआ है। बैंकों में पैसा पब्लिक का होता है, बैंकों में पैसा मोदी का नहीं है, बैंकों में पैसा अंबानी का नहीं है, बैंकों में पैसा किसी टाटा या बिरला का नहीं है। बैंकों में जो पैसा है भारत की जनता की खून पसीने का कम है। बैंकों के पैसे आप खा गए, बैंकों को कंगाल आपने कर दिया। आपके होते हुए इतना लूट पैसा के ले गए, आपने कुछ नहीं किया। अभी तक ड्रामे करते हैं खाली, जब उसको पकड़ के लाएंगे, उसके एक्सट्रेडिशन कराएंगे, सब ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का? आज ठीक है आप चुनाव जीत गए, इसका मतलब ये नहीं आप मालिक होगा इस देश के। आपका चुनाव भी फ्रॉड से आपने जीता है। बताइए 20 लाख मशीनों का क्या होगा? कहाँ है वो मशीनें? बताइए जिन सीटों पे आपके इतने फर्क क्यों आ रहे हैं? 330 सीटों पे, 375-72 सीटों पे क्यों इतने वोटों का फर्क आ रहा है? इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयुक्त के हाथ बंधे हुए। चुनाव तो कुत्ता बिल्ली की तरह बन गया, बोल नहीं सकता, उसका जवाब देना नहीं आता है, बस खाली अपनी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन हटा देता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। आपका अपना बैठाया हुआ आदमी है वो, कोई दूसरा नहीं है। वो आपका चमचा पतीला कढ़ाई कुछ भी कह दीजिए उसको, उसकी कोई औकात नहीं रह गई आज की तारीख में। उसने चुनाव आयोग की वैल्यू को इतना गिरा दिया कि उठाई नहीं जा सकती ऊपर, जब तक कोई ट्रेन सेशन दोबारा ना सीट पे आ जाए। एक वो ट्रेन सेशन था जिसने इतनी ऊंचाई पे ले गया था इस सीट को, और एक ये है अरोड़ा जिसने इसको गर्त में डाल दिया। कहते हैं ना पाताल में डाल दिया इसने इसको। ये सच पाताल ऐसा ही होता है, जहाँ कोई पकड़ा ना जाए, जहाँ नेगेटिव वैल्यू में इतना घुस जाए आदमी की वहां से बाहर ना सके, अंधेरी कोठरी में चला जाए। कोई हाल इस चुनाव आयोग ने किया है और उसके जिम्मेदार डॉक्टर मोदी है। मोदी है, राष्ट्रपति है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है इस देश में। आंखों के सामने हो रही हेराफेरी को हम देखते रहे, राष्ट्रपति देखता रहा, मोदी देखता रहा, सब देखते रहे, कोर्ट देखता रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा और वो चोरियां कराता रहा, ऐसी तैसी कराता रहा। किसी की सुनी नहीं, अपोजिशन की सुनी, पब्लिक की नहीं सुनी, किसी की बात नहीं सुनी, और चुनाव को एक ऐसा रंग दे दिया इसमें रंग ही रंग है। वो चुनाव, ऐसा चुनाव हिस्ट्री में भारत की पहले नहीं हुआ, और आज वो चुनाव ने देश को ऐसा राजतंत्र हाथ में पकड़ा दिया है कि भारत की जनता सोच में पड़ चुकी है कि हुआ तो क्या हुआ। हमने तो वोट दिया नहीं था, जीता तो कैसे जीता? अरे भारत की 75% जनता ने आपको वोट नहीं दिया और फिर भी आप 351 सीट लेकर आ गए। कितनी अच्छी बात है। किस तरह से यहाँ चलती है, किस तरह से सीटें बनती हैं, किस तरह से ईवीएम का काम करती है। वो पब्लिक 70% 75% जो आपको वोट नहीं दिए और वहां से आप जीत गए, इससे ज्यादा और क्या होगा? ये तो तभी होता है जब नशे में सब दवाई पी के वोट देने जाए, तभी होता है। वो भी नहीं लोगों ने किया होगा, लेकिन आपने सब मैनेज कर लिया। कितनी अच्छी बात है। क्या ईवीएम का ड्रामा है? ईवीएम ना हो गई, जादू की पुड़िया हो गई, जादू की मशीन हो गई। आपने किसी भी तरह से सत्ता में आना तो आप आ गए। आपका यही था कि सत्ता में आना है, फिर देखा जाएगा जो होगा। देखा क्या जाएगा? भारत रिपब्लिक है, सीधी सादी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये अरब नहीं है, ये सूडान नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है, ऐसी कोई इजिप्ट नहीं है जहाँ उठा के फेंक दिया जाता है राष्ट्रपति को भी। ऐसा देश होना चाहिए था, तो आपकी औकात नहीं थी, आपकी ताकत नहीं थी। अरे सूडान जिस दिन बन जाएगा, ये देश वेनेजुएला बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह राज चलता है।
आपने यहाँ की सीधी सादी गरीब जनता को, सीधी सादी जनता जो रोटी पानी के चक्कर में रहती है सुबह शाम तक, उसको इस तरह भावनाओं को लूटा, उसके वोट को लूटा, उसके ईमान को लूटा, उसकी शराफत को लूटा, और आप सत्ताहीन हो गए, सत्ता के साथ आ गए। आप दुनिया को दिखा रहे कि हम जीत के आ गए, हम कितने बड़े बादशाह हैं यहाँ के। कितना दुख होता है भारत की जनता को धोखा देने के बाद अब सत्ता में बैठे हैं, आ गए हैं। 20 लाख मशीनों की चोरी करा के आपने उसका इस्तेमाल किया, अब सत्ता में आ गए। आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप सोचते हैं, लेकिन मत भूलिएगा जनता जब तक चुप रहती है तब तक चुप रहती है, और जब जनता सामने आती है तो जनता ऐसा करती है कि आप देख भी नहीं सकते। ये वही जनता है जो आसमान पर बिठा देती है, वही जनता है जो गिरा देती है। जनता कर भी चुकी है, पीछे रिकॉर्ड भी है। इस बार आप कैसे आ गए आप ही जानते हैं, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि सच्चाई तो छुपेगी नहीं, कभी ना कभी बाहर आएगी। लेकिन सच्चाई आपको तो मालूम है, आपको तो पूरा मालूम है कि आपने क्या किया है। जो पहले ही बता दे कि मेरी इतनी सीटें आनी है और गारंटी से कह दे कि इतनी सीटें उतनी आ जाएं, उसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं, सब समझते हैं। आप 10-5% आगे पीछे होती, 50%, 30%, 40% आगे पीछे होते मान लेते, लेकिन आपने इस गारंटी से कहा कि हम जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी। इस गारंटी से वही कह सकता है जिसको उसके बारे में सच्चाई मालूम हो, जिसने जो गलत काम किया उसको उसके बारे में पता हो, और वो आपने किया, आपको जानते थे अच्छी तरह से। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम नागरिक हैं इस देश के, हमारी एक लिमिट है। बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन सुनेगा कौन? जो सुनने वाले हैं वो तो खुद गलत हैं, वो तो सुनेंगे नहीं। अब जो लोकसभा में पहुंच गए 45% लोग तो वैसे ही दूसरी जाति के हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल जाति, वो तो सुनेंगे नहीं। बाकी लोग बोल नहीं सकते क्योंकि डरते हैं। और एक कांग्रेस से उम्मीद थी कि जमाने की कांग्रेस पुरानी पार्टी है, देश को चलाया है कांग्रेस ने, देश को बहुत कुछ करके दिखाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस को सख्त, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी लगता है खून जम गया है। कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं है जिसके अंदर दम था। ये एक डरपोक कांग्रेस है, बुजदिल कांग्रेस है, एक जानवर की तरह बिहेव करने वाली कांग्रेस है। इसको पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। इनकी आंखों के सामने से चोरी हो गई और ये देखते रह गए, शोर तक इन्होंने मचाया नहीं, अपनी मशीनों को बचाया नहीं, रखवाली नहीं की, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अरे आप कुछ करते तो सही देश के लिए, आप पकड़ते तो सही इनको कि इन्होंने कहाँ का गंद फैलाई है। आपने तो कुछ भी नहीं किया, आज भी आप चुपचाप ऐसे बैठे से कुछ हुआ ही नहीं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम लोकसभा में शोर उठाएंगे। अरे आपके शोर को कौन पूछ रहा है आपकी लोकसभा में क्या करेंगे आप? किसको जरूरत पड़ी है पूछने की? आपने अब तक नहीं किया तो आप क्या करेंगे? अरे हिम्मत थी तो सड़कों पे आइए, हंगामा कीजिए, शोर मचाइए। पब्लिक को लूटा है इन्होंने, आपको नहीं लूटा है। मेरे वोट को लूटा है, किसके वोट को लूटा है इन्होंने, जिसने वोट ही नहीं इनको दिया उनके वोट को लूटा है इन्होंने। वोट लूटना नोट लूटने से भी ज्यादा होता है, क्योंकि वोट लूट के सत्ता में आता है, सत्ता के बाद सत्ता को खा जाता है इंसान। अरे ये वही लोग हैं जिसने मेरे वोट की चोरी की है, आपके वोट की चोरी की है, चोरी का मतलब डकैती भी डाली है, बिना कहे लेके चले गए वोट। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? 20 लाख मशीन कम नहीं होती हैं, 1-2 होती तो मान लेते, 10-20 होती तो मान लेते, 50 होती तो मान लेते। 20 लाख मशीनें 2 मिलियन होती हैं, 20 लाख मशीनें इनके पास कहाँ हैं ये बताएंगे नहीं और पूछेगा नहीं। कांग्रेस तो खाली बातें करते रहे, सब कुछ नियम कानून से नहीं होता है, बहुत कुछ तरीके दूसरे भी होते हैं। जब एक गंदा आदमी आपके साथ मिल जाता है तो ठीक करने के और भी तरीके होते हैं। लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं, और अब रात आप चलानी जानते नहीं। आप किस बात की कांग्रेस के? कैसे आपने आज़ादी ली होगी, हमको तो आज समझ नहीं आ रहा। सब कुछ वो जमाने गए, गांधी के फार्मूले हर जगह लागू नहीं होते हैं, वो सब कहने की बातें थी उस समय, आज नहीं। आज गांधी जी भी होते तो वो भी शायद वो चीज़ नहीं करते, क्योंकि आदमी खराब हो चुका है, जंग लग चुका है लोगों की सोच पे, लोगों की सोच खराब हो चुकी है। जब लुटेरे पैदा हो जाए देश में तो उनको ठीक करने की डंडा उठाना ही पड़ता है। तो डंडा नहीं दिखाएंगे आप। गांधी डंडा भी रखता था, मत भूलिएगा। डंडा क्यों रखता था वो आपको समझ नहीं आएगा। शांति भी करता था, लेकिन जरूरत पड़ने में डंडा भी यूज किया करता था। डंडे का सहारा लेके वो चलता था, इसलिए नहीं कि चलता था कि उसको चला नहीं जाता था, इसलिए चलता था कि अगर डंडे की जरूरत मुझे पड़ेगी तो मैं डंडे का भी इस्तेमाल करूंगा। आप उससे सोच को समझना होगा। गीता का क्या कहता है? हम गीता के बारे में वो बात करते थे, तो बाइबल के बारे में बात करते थे। गीता में क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए। कर्म की या फल की चिंता, मतलब कर्म में डंडा चलाना भी कर्म होता है, खाली शांति से काम नहीं होता है। जब कृष्ण ने कहा था 5 गांव दे दीजिए, उसने नहीं दिए थे तो महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर वो 5 गांव दे दिए जाते तो युद्ध नहीं होता। इसका मतलब ये भी है कि जब तक शराफत चलती है चलाइए, जब शराफत नहीं चलती है तो हाथापाई भी करनी पड़ती है। और आज समय है कि आपको हाथापाई करनी चाहिए, नहीं तो आप नपुंसक कहलाएंगे। हम आपको नपुंसक छोड़िए, क्या लिस्ट हुई, क्या करप्शन हुई, क्या धांधलेबाजी 5 साल में, उसका बात करने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप सत्ता में नहीं तो आप क्या कर लेंगे बताइए? आप सत्ता में हो नहीं, आप इंक्वायरी भी नहीं कर सकते, आप पकड़ भी नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। शोर मचाने से, टीवी पे आने से, प्रेस में आने से क्या फायदा है? छोड़िए बेकार की बातें। लठ उठाइए ईवीएम के खिलाफ, युद्ध कीजिए ईवीएम के खिलाफ, जो ना माने उसे ठीक कीजिए। यही क्रांति होती है देश में। अंग्रेजों से भी बढ़ के अंग्रेज जब सीट पर बैठ जाएं, अपनी चलाएं, किसी की सुने नहीं, तो जिस तरह से अंग्रेजों को भगाया था इस तरह से इनके भी हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे, तभी ये ठीक होंगे।
क्योंकि ये समझते हैं देश इनके बाप का बन चुका है। ये समझते हैं कुछ भी करेंगे देश में, हिटलर शाही करेंगे, जो भी मर्जी करेंगे। अरे जिस सभा में 233 होंगे, 233 रिकॉर्ड में आ चुके हैं, और पता नहीं कितने होंगे, वो देश को चलाएंगे शराफत से। आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? अगर आप उम्मीद रखते तो आपसे बढ़ के बेवकूफ दिमाग वाला कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस वालों, एसपी वालों, बीएसपी वालों, आप लड़ते रहिए अपने अलाइनमेंट से। कौन आपके अलाइनमेंट को पूछने जा रहा है? कौन, क्या फर्क पड़ता है आप अलायंस में है या नहीं है? अलायंस में हो के भी इन्होंने तो इनकी चोरी की है, तो आपके अलायंस होने से या अलायंस में नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सिर्फ नर्वस है इस बात को देख के कि हमारे हाथ से सीटें कैसे निकल गई, इसलिए आप परेशान हैं, आपकी आत्मा ही परेशान है। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको सोच समझ के काम करना चाहिए। अब मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। अब वो गए दिन शराफत वाले। अब मत सोचो आगे क्या होगा, ये सोचो कि आज क्या हो रहा है। उसका जब तक आज का इलाज नहीं होगा तो आप आगे इलाज नहीं कर पाएंगे। ये लोग शैतान हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। ये बहकावे में इन्होंने युवा को भड़का दिया है। युवा लोग इनकी बातों में आ गए हैं। वो युवा जिसको मतलब ही नहीं पता कि शांति क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, क्रांति क्या होती है। वो युवा खाली अपने नशे में घूमता है, वीडियो देखता है फिल्मों के दूसरे, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ बॉयफ्रेंड साथ गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड साथ बॉयफ्रेंड होनी चाहिए, जिसका कोई उसे ही कि अब मेरे को जॉब मिल जाए, इसी रूम में बैठ के बस मैं ऐश करता रहूँ। अगर युवा की सोच आज इतनी सीमित हो गई तो आप जानते हैं इसका क्या इंतजाम होता है। फौज भी हमारे तब तक काम करेगी जब हम सही होंगे। जिस दिन हम फौज भी ये सोचेगी कि ये लोग इतने हो गए, हमें इनकी क्यों हम रक्षा करें, तो देखो देश का हाल क्या होगा। आप देख सकते हैं कुछ देशों में क्या हो रहा है। इसलिए कांग्रेस वालों, आपका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है आज के वक्त में, जब देश बर्बादी की हालत पे खड़ा है, ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है, पता नहीं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य हुआ। बेशक आप हार गए सीटें, चिंता न कीजिए इस बात की, सीटें तो आनी जानी रहती हैं, लेकिन देश को संभालना बहुत जरूरी है। आज देश इस हाल पे खड़ा है, वो किधर जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि इन लोगों के होते हुए ये हिंदू राष्ट्र बनेगा या क्या बनेगा, या मनुस्मृति आएगी या क्या नहीं होगा, क्या होगा कौन जाने इनके मन में क्या है। क्योंकि ये पहले ही कह चुके कि 2020 में हमको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब वो हिंदू राष्ट्र नाम रखना है इसका, तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? भारत की पब्लिक क्या करेगी उनका? इसका तो एक ही तात्पर्य यह है कि आपको अभी समझना होगा, प्रिकॉशनरी मेजर लेने होंगे। पहले आप सोते रहे, इलेक्शन के टाइम में, पोलिंग के टाइम में आप सो गए तभी सब कुछ हुआ। अगर आप सोते नहीं तो ऐसा नहीं होता। कांग्रेस वालों से लोगों को ज्यादा आशा है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पार्टी रहे हैं, देश को आपने आज़ादी दिलाई है। और आज आपको क्या हो गया, कौन सा मच्छर काट गया, आपको किस बिच्छू ने डंक मार दिया, आपको हमारी तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपसे उम्मीद पब्लिक नहीं रखेगी तो पब्लिक अपने आप कब तक लड़ेगी, कैसे लड़ेगी? उनको कोई नेता तो चाहिए ही होता है, उन्हें खुद नेता पैदा कर रहे होंगे। वो हरिजन लोग जिनको कहा जाता था पहले, हम जिसे कहते हैं हम 85 मूल निवासी, वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस जीत से। उन्होंने वोट नहीं दिया, फिर कैसे जीत गए, बात समझ नहीं आती। अब कांग्रेस वालों होश में आ जाओ, राहुल गांधी होश में आ जाओ, सोनिया गांधी होश में आ जाओ, अपनी नींद से जागो। अभी तक नींद सो रहे हैं आप। आपके साथ ऐसा झटका लगा है आपको चुनाव हारने का, शायद आप सह नहीं पा रहे हैं इसको, और ये अच्छी बात नहीं है। झटके तो पहले भी आपको लगे थे, लेकिन इस बार का झटका ज़्यादा लगा है। लेकिन झटका खाने से कुछ फायदा नहीं है। और बाकी दलों को भी मैं कहूँगा, भूल जाइए मोदी। मोदी मोदी एक धोखा रहा है इस चुनाव में। मोदी एक ऐसा बल्ब रहा है जो फ्यूज्ड है, जबरदस्ती सत्ता में आया है। मोदी को लोग उन्होंने वोट दिया, जब मोदी भागते हैं, बाकी ने वोट नहीं दिया है। वोट तो वो गायब हो गए, दूसरे वोट रखे गए। ये सच्ची बात है। वोटों की मशीनें बदली गई हैं, झूठी बात नहीं है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि चुनाव आयोग क्या कहता है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि बीजेपी वाले क्या कहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि ये बिक्यू चैनल, टीवी चैनल, मोदी चैनल क्या कहती हैं। उनका तो काम मोदी के फेवर में शोर मचाना है, इसी बात के पैसे वो लेते हैं। इन्हें कुछ लेना देना नहीं है देश से। ये देशद्रोही चैनल है सारी की सारी, जितनी चैनल है मोदी की बिकी हुई हाथों में, सब देशद्रोही चैनल है। और मोदी ने आज जिस जगह कब्जा किया, वो जानता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस वालों, आपने अंग्रेजों को भी भगाया था इस दुनिया से, इस देश से। आज अपना कर्म दोबारा उठाओ, उसी कांग्रेस की आत्मा को दोबारा लाओ, यदि आप इस देश को बचाना चाहते हो। नहीं, इस देश का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है। आज की तारीख में कोई सुनने वाला नहीं है। इस देश में 1947 जैसे हालात हो चुके हैं। ये तिरंगे की कोई वैल्यू नहीं देंगे, दिखाने के लिए तिरंगा फहराएंगे। ये संविधान की कोई वैल्यू नहीं देंगे, दिखाने के लिए संविधान पे माथा टेकेंगे। ये किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इनके खून में वो चीज़ है नहीं। इनके खून में जो चीज़ होती है वही बाहर आती है। इनके खून में लाल उगता है। इनके खून में सिर्फ एक ही बात 347 में कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। और आज ये उसी मोड़ पे आ गए हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए, और ये करेंगे। कांग्रेस वालों, आप बुज़दिल हो, आप हिजड़े की तरह काम कर रहे हो। आपको आग जलानी होगी अपने अंदर, आपको आत्मा को झंझोरना होगा, नहीं तो आप भी देश के दुश्मन कहलाओगे। हम आपको कांग्रेस मानेंगे नहीं कि कांग्रेस का मतलब शक्ति है। कांग्रेस का मतलब कोई पार्टी नहीं था।
कांग्रेस वो कहते थे जिसके अंदर सारी पब्लिक आई। उस टाइम कांग्रेस जो होती थी खाली सत्ता वाली कांग्रेस नहीं होती थी, पूरे देश की पब्लिक को कांग्रेस कहा गया था। गांधी ने सबको एक माना था कि ये पूरे देश की जनता जो है कांग्रेस है। उस टाइम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग नहीं थे, पूरे देश की जनता थी। और पूरे देश की जनता ने उन अंग्रेजों को जो यहाँ पर राज करने आए थे, वहां से भगाए गए गुंडे, उनको भगाया था। और आज वही हालात है, वहां से 3000 गुंडे आए थे और यहाँ 233 संसद में आ चुके हैं। वो तो वैसे आए थे काम धाम करने, ये तो सचमुच एमपी बन के बैठे हैं। अब जब ऐसे गुंडों के हाथ में सत्ता आ जाए लोकसभा की तो क्या होगा हम नहीं समझ सकते, आप जान लीजिए। हमारी पावर लिमिटेड है, हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, युवाओं को समझा सकते हैं, दूसरे लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन युवा समझना नहीं चाहता। युवा में गंद भर गई है दिमाग में कि कांग्रेस गलत थी, पब्लिक गलत है। जो खिलाफ बोले मोदी के वो देशद्रोही है, जो खिलाफ बोले भारतीय जनता पार्टी के वो देशद्रोही है। जब इस तरह की गंद छा जाए लोगों के मन में तो बेचारा वो तो 18-20 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा वो इतना एनालाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पहली ज़रूरत है रोटी, उसकी पहली ज़रूरत है जॉब। वो पढ़ लिख के आया है, BM.Sc, PhD जो भी किया है, उसको पकौड़े तलने पड़ेंगे तो पकौड़े भी तलेगा, उसको कुछ भी करना पड़ेगा करेगा, उसको रोटी चाहिए, पकौड़े तलने ही सही, लेकिन उसको जॉब चाहिए। इसके इंतजार करता रहा, वो जॉब उसको मिलेगा नहीं क्योंकि जॉब होगा नहीं। आज जो हालात चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को पुश किया जा रहा है और गवर्नमेंट कंपनी को तोड़ा जा रहा है, यही तो ये चाहते थे। ये तो राजाओं के चमचे थे, ये तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लालाओं के चमचे थे, ये तो बड़े बड़े लोगों के चमचे रहे हैं। आप जिसको नहीं मालूम उनके लिए बता रहा हूँ। बैंकों के हाथ में, लालाओं के हाथ में हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में हुआ करते थे, और बैंकों का पैसा वही लोग अपने काम में लगाया करते थे। और वही हाल राजाओं का था। जब पटेल ने साइन किए थे एग्रीमेंट हर स्टेट से कि हम आपको 8% से ज़्यादा रॉयल्टीज की देंगे, जब तक देते रहेंगे हमारे पास पैसा होगा। और उनको इसी बात से उन्होंने इंटीग्रेट किया था भारत के अंदर, और कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब देखा था कि ये लोग तो फालतू के पैसे ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है, टैक्स सरकार में आना चाहिए, ये किस बात का टैक्स ले रहे हैं, तो उनके टाइटल्स भी, उनके राजा या नवाब के टाइटल हटा दिए गए और उनकी जो रॉयल्टी मिलती उसको बंद किया गया। इन दोनों बातों को लेकर बाहर यही लोग, जनसंघ वाले लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए कि आप इनके पैसे क्यों काट रहे हैं, इनके टाइटल क्यों बंद कर रहे हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, जिस जनसंघ की सोच ऐसी हो, जनसंघ जो बाद में बीजेपी बनी, उनकी सोच ही शुरू से इन पैसे वालों की रही हो, तो आप उनसे क्या आशा कर सकते हैं। आज उनकी सोच वही है, अडानी अंबानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनसे पैसे लेना, डोनेशन लेना, उसके बाद उनकी मदद करना। तो ये आप क्यों इनके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपकी मदद करेंगे। सच्चाई तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना कांग्रेस ना बीजेपी से, लेकिन हाँ, सच बोलना आवश्यक है। ना मैं किसी पार्टी का हूँ और ना मैं होना चाहता हूँ। अगर पार्टी होगी तो मेरी अपनी होगी, जो कि कभी नहीं होगी। मैं किसी की, अगर वो सत्ता में आऊँगा तो अपने दम पे आऊँगा, किसी कांग्रेस या बीजेपी के थ्रू नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, मैं जानता हूँ दोनों गलत है। ना कांग्रेस दूध की धुली है, ना भाजपा दूध की धुली है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। जो काम कांग्रेस से नहीं होता वो बीजेपी करती है, जो बीजेपी से नहीं होता कांग्रेस करती है। ये दोनों सत्ता के ललूपी हैं, लेकिन सत्ता तो चलनी है, इसलिए किसी को तो रहना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक भाजपा का सवाल है, मैं भाजपा के साथ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने उस समय देश का साथ नहीं दिया जब इनकी आवश्यकता थी। उस समय ये देश के विरुद्ध काम किया इन्होंने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध बोले, ये रॉयल प्रिंसेस राज को हटाने के विरुद्ध बोले, तो इनका साथ तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये देश के कभी उसमें थे ही नहीं। अभी देखिए, गौ हत्या की बात ये करते हैं, लोगों को, मासूम लोगों को इन्होंने मरवा दिया। राम मंदिर के पीछे पड़े हैं। अरे राम को मंदिर की आवश्यकता है क्या, सोचने की बात है। रोटी नहीं, लोगों के पास खाना नहीं है, आप राम मंदिर की दवाई देते हैं, आप कोई और बात करते हैं। आपकी ये स्टंटबाजी ज़्यादा नहीं चलने वाली। धर्म से देश नहीं चलता है, देश मेहनत से चलता है, लोगों की डेडिकेशन से चलता है, लोगों के कर्म से चलता है। आपकी बातों से देश नहीं चलता है। हमें ये सोचना होगा, तो समझाना होगा सबको। इनकी अब तो खैर समझाने का भी फायदा नहीं है, ये लोग सत्ता में बैठे हैं, जब तक ये सत्ता से हटेंगे नहीं, और कांग्रेस चलने देगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सब पार्टियां जानती हैं, चुनाव आयोग जानता है, यहाँ तक कि न्यायालय भी जानता है कि ईवीएम मैनेजेबल है। ईवीएम कोई ऐसी मशीन नहीं है जो बहुत एक्सपर्ट मशीन हो, जिसको मैनिपुलेशन ना किया जा सके। चलो एक मिनट के लिए मान भी लें कि ईवीएम हैकेबल नहीं है, बदली तो जा सकती है, इस बात को ही ले लीजिए। क्या ईवीएम बदल नहीं जा सकी होंगी?
आप ऑफिस में बैठ के ईवीएम में वोट डाल दीजिए और लाकर स्ट्रांग रूम में जो रखे उनको हटा के वो रख दीजिए। क्या ऐसा तो हो सकता है ना? जब बैलेट बॉक्स पे रैगिंग की जा सकती है, जब बैलेट बॉक्स बदले जा सकते हैं, तो ईवीएम क्यों नहीं? सवाल ये है कि एक ऐसी मशीन जिसपे लोगों का विश्वास नहीं, जिसपे बड़े बड़े देशों का विश्वास नहीं, जहां ईवीएम हटा दी गई हो, अमेरिका जैसा देश, इंग्लैंड जैसे में स्टार्ट ही नहीं करी ईवीएम, जर्मन जैसा देश, रशिया जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, जहां ईवीएम का यूज नहीं होता है, तो आपको ऐसी क्या जिद है कि हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे? इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि आपको उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, पार्टी का इंटरेस्ट है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। नहीं तो ईवीएम की क्या औकात, क्या ईवीएम गुलाम है? क्यों हम गुलाम हैं ईवीएम के? Ladies and gentlemen, dear friends, first of all, I shall like to congratulate each and every friend। मैं हिंदी में भूल गया। सबको ईद की बधाई, ईद उल फित्र की बधाई। देश में, विदेश में, भारत में, पाकिस्तान में, किसी और कंट्री में, जीसीसी में, मिडिल ईस्ट में और दुनिया के किसी कोने में, everybody who is a Muslim, who observed his fast for 30 days successfully, are all congratulated for celebration of Eid al-Fitr. This is a great festival in Islam and all respect this festival, and they continue to celebrate this for many days. I wish you all best for all those people, my friends and non-friends belonging to certain community of Islam. They are celebrating this festival, great festival of world. Congratulations to celebrate in a peaceful way, enjoying way, great way. I'll start now about this BJP, Congress, and our country. It was time in 1947 when we got freedom from British. This freedom wasn't easy, but people think it was easy. It was a game of football or cricket? No. It was given to us as a prize? No. Was given as a gratuity? No. It was pulled from them. It was snatched from them. It wasn't easy. Never easy. We think it is easy? No. Those who were born post, I was also born post of 1947. I don't know, I was not physically present in this world before that. And if my father was present, my mother was present, others were present. They just told us, all those forefathers, all those our seniors told us about what has to happen in that time. We have to disregard that statue. We have to disregard those conditions, but those conditions cannot be forgotten, cannot be made obsolete, because those who are in those days, our people faced difficulties. No development in those days, except whatever development was meant only for those people who ruled us in the British. Good cities were made only for them. Good railway system was made only for them. Even Gandhi was thrown out of train in South Africa. Do you know that? Gandhi, who is now Mahatma of this nation, who is responsible in alliance with many other leaders like Subhash, like Patel, and like all those, Jawaharlal Nehru, and many lakhs others who sacrificed for this nation, including Afridi in 1857 and Jhansi Ki Rani, and all those whoever, I cannot name all, I don't remember names of all, but many lakhs of freedom fighters who sacrificed their lives, laid their lives for getting this country, Bharat, liberated from clutches of those British people. They contributed to our freedom. They contributed to our present situation. They contributed from 1947 to this day what we are, and they struggled for hundreds of years. The struggle was not done free of cost. They you can say they spent their money, they spent their wealth, they spent their blood, they spent everything to get us freed, and keeping circumstances abreast in those days. After long struggle, very long struggle, which we cannot forget, and we cannot say that that was a struggle. We have to evaluate that struggle and keep in view where should we go now. Where have we traveled so far since 1947 to 2019? We have traveled about some distance, and we have traveled from a stage when there was not even a needle manufactured in this country, Bharat. Not even a needle, not even desalination plant was here. Waters were here, but no control of there. There was land, there was good fertility. People had good quantity of grains, good quantity of pulses, good quantity of food to eat, rice and all that. From viewpoint of eating, there was no major problems after which people left from here. Of course, there was no other facility available, no good development was there, no good roads were there. Gandhi did so many things, Jawaharlal did so. Gandhi, of course, was killed by some person, mad person, of course. Those people who are now
worshipping that person who killed Gandhi, Godse. They are really stupid people, I can say. They don't understand what does it mean. They support Godse, who was a Brahmin, only from this reason. They support top class Brahmin was Godse, and he killed Gandhi. Gandhi made losses to none. Gandhi sacrificed for this country like Subhash sacrificed. Gandhi sacrificed his life. Gandhi was not poor. If he wanted to live a good life, he could live. There was no problem for him to live at all because he used to travel first class in South Africa. He was not poor man. He had adequate social status. He could do whatever he wanted to do by having good practice as barrister in Virginia. But he later on elected when he was thrown out of praying that he came to know that this was a problem, and racial problem was there, and slavery problem was there. He did a lot of things. He opposed British regime, and then he came to India and worked for nation, and he visited whole Bharat to know what people are in. And he had a clash with even Jinnah when Jinnah said something about Gandhi said that 500 people or liars cannot liberate this country. We have to collect people, we have to assemble aggregation of people, we have to get Congress from all over this country, we have to bring people, we have to import people into Congress, not simply political parties. Congress was collective regulation of Congress, and that happened. That time was real Congress, not this political Congress alone. At that time, there was no RSS in practical, you can say in practical activities. There was no BJP, no, they were not involved. They are now saying so many things, those were saying, but they don't know, they had no contribution at all. All their four leaders, four fathers did not recognize freedom struggle, they did not care about that. At an individual level, they might be, but as a formal level, they did not recognize Gandhi's contribution. They did not recognize Subhash's contribution. They didn't recognize anything. They just supported Hitler, and they supported Jews, and they supported so many others which are not required to support. But they did that. Unfortunately, our such people who came from 1947, till 1947 they had been staying in Pakistan, known later on at that time as part of Bharat. Before 1947, it was also part of Bharat. They had been staying there for millenniums, and just because in 1947 it was partition and they didn't want to stay there, they could stay there, no problem. They were just like they came back from there, they came to this country without any information. Howsoever, government digested them, absorbed them, because they opted out from that country, now Pakistan. At that time, Pakistan, 1947. Before that was Bharat. Same thing happened to Bangladesh. That time, Bharat. Well, it's no question of criticism because they opted for that, but that was not a good option. Had there been Mughal rules in this country for many centuries, did we leave this country because Mughals ruled us? No, we did not leave this country. It's our home. Whoever rules us, that's our weakness. If English ruled us, that's our weakness. If Mughal ruled us, that's our weakness. Somebody can rule us when we are weak. If we are strong, nobody will weak us. I was in England in 1985 when some very senior person, veteran, asked me, why you did not use your guns when our people reached you to lead you? Was a good question. I could not answer. He said that 3,000 people from prison were expelled, were exiled to beyond seas, and those people, he didn't know how could they reach our nation. But it happened. They mercantiled with us, and gradually, slowly, they ruled us. Whose weakness was this? This is our weakness. Because we welcomed them. Oh, in Hindi we say, Atithi Devo Bhave. So this phrase, this idiom was used, Atithi Devo Bhave, and we accepted them as guests, and then we accepted them as our gods, which enslaved us. And this was our weakness, not their weakness. So our weakness continued for many, many decades and centuries, and one day we had to come out of that stupidity. And we came out in 1947, but we came out with a view that our people, our kids should get benefit out of that. We had combination of policies in economy that there should be government sector as well as there should be private sector both, but private sector must not dominate. People with 10 or 20% people must not dominate 80% society financially. This was basic policy of that government of Jawaharlal Nehru. He used to say that money should not be concentrated in few people of this country. It should be meant for all people of this country. It should be helped because money is not doesn't belong originally to one person. Money comes from natural wealth, earth resources,
And earth is not owned by one man or two men. If there are great people now or before in money sector, in finance sector, in business sector, it's not because of their own power. It's because of they abused our resources. They were intelligent enough to loot us and they looted us. It's still same things happening now. Public deposit money in banks and that money is used for development of nation, granting of loans and so many other activities to carry out. And these people got benefit of that in unsecured manner. There was no guarantee required. There is no guarantee required even now to get loans if industrialists require that. Only thing is your reputation to get those. So if you want to a house or something for individual basis, you have to prove each and everything, and that's a difference in policy. However, these people enjoy life like Tata, Dalmia, and all those who had very good money. Still, Adani, Ambani, who are enjoying life because they have very good money. They get public money, they get public employment, they get public, you can say, workers and everything was cheap in this country, and they are dealing in everything and enjoying life. And people think that they are serving nation. They are serving nation or they are serving themselves. That is a question mark. I don't consider they are doing something great to this nation because they are using money of this nation. They are not using money of their forefathers or from long past 500 years. They are using their own money. No, they are getting money from our banks and they are using that. So there's nothing obligation they are doing on us. It's just serving. They are just acting mediators to something like agents, like working agents, like dealing agents. It's like that. Means even technology is not there. Technology is purchased, and our people are creating technology, or they are taking importing technology, and that is being paid for, and that's also from banks, something else. Anyhow, sir. Question is, where do we stand? Do we accept, as people of this country, as voter of this country, that my vote should be robbed or should be stolen? Should I accept that? If you think that's the right thing, well, thank you very much then. Congratulations, you'll be happy with that. But as a citizen of this country, concerned citizen, serious citizen, non-sleeping citizen, I have to think on that. My mind is there to think. It's not to just sleep. If my mind is sleep, I sleep. I have to think first. I am a very educated person. Education teaches you how to think. There's no meaning of education if you are unable to think, then you are stupid. I would say simply. If you are very well educated, having degrees and diplomas and everything, and engineering, PhD and all that, you must have a capacity to think, and this is a service to nation if you think. If a medical doctor, if an engineer, if an advocate, or whosoever professional, chartered accountant, someone else, they have developed minds, they have professional minds, they have power to think. That has been earned by earning degrees. If you cannot think for your nation, only for your what you think, what do you think? Are you doing justice to yourself? Are you doing justice to your nation? Are you doing justice to your mind? Are you doing justice to your religion? Are you doing justice to your God? Are you doing justice to this world? No, you are not. It is your first duty to think of this nation because you are born on this nation. You are a kid of this nation. This nation brought you up to this level that you could study, you could live, you could advance. But you are not thinking for that. You are just living a way you should live. Are you born to live and eat and die? If that is your destination, fine. But being honor of this country, you can call yourself honor of this country because you are born here. No problem. You are born here. You study here and go to USA and go to England, go to for sake of earning money. That is different case. But you have to think for this country. You have to think that country should be fine. You cannot hand over this country to a criminal. There are 233 criminals who are handling this country now. Shame on each and every one of us. Shame on 85 or 95 crore voters. Really. Those voters who accepted these criminals. These accused criminals. These 233, this is official figure, maybe more. If we can allow 233 accused criminals to lead to Lok Sabha and then rule us, what does it mean? How beautiful you can take this? I don't know. Is there some good definition for this? Maybe you know well. You're all professionally educated, equipped people, or even those who are non-professionally equipped people. They should understand. And those leaders who named them in election, they are all criminals, I should say. Whoever you may be. If Rahul Gandhi approved them, or if Modi approved them, or if Mayawati approved them, or whosoever else approved them, I will consider them all in same boat. Public trusted you people, whether they trusted Congress or they trusted BJP.
They did not have time even to think who candidate, contests from which area. They just voted for Modi, or they just voted for Congress or some other party, thinking that you might have done very good for them to elect or to nominate candidate for their party. Result is that we have now to welcome 233 criminals to Lok Sabha, 45% strength of Lok Sabha, really a brilliant record in democratic history of this world. Those people belong to world other countries, democratic countries, must be laughing on us. What type of voters these are. They call them first democracy in world, and this is what they have achieved. 45% rulers in this country, legislators in this country, come from history sheet background. What a great insult, or what a great respect. You can say, you consider as respect, honor, or you consider as an insult, you have to decide. Of course, insult is insult. If this country had less educated people, that would be different. Those people who are educated, if they cannot even think how to vote, how to select candidate for voting, nobody can answer. You may be qualified, you are educated, you may be engineer, you may be doctor, you may be philosopher, you can be of any level. If you had to vote Modi or Rahul, then nobody can define what your mind is, what your level of understanding and development is. You are human being, of course you are human being. You have it, you can be given benefit doubt, of course you can be given benefit doubt, but that doubt means some limit. It doesn't mean free doubt. You have used that free doubt. How could such a quantity, such percentage, high percentage, say equal percentage of criminals have gone to an august house of this country, Lok Sabha, which is first house which makes laws, and which is first house we send our people there to lead this country. They are all our agents. How can I send my agent as criminal to Lok Sabha? Shall you send that? I don't know, but you have sent that. How this ever is there, God knows, Modi knows, Rahul knows, or other knows. I don't know at least. Public, how could vote them? I don't know. Really, I am very sorry. I am very regretful to know about this sad situation, this incriminating situation for Lok Sabha. Such criminals are there. They shall make laws for us. They shall impose taxes on us. They will rule us for another 5 years or maybe forever, because they will withdraw all their cases automatically or by virtue of pressure from Lok Sabha onto judiciary. There can be anything. These people will come clean out, and then they will become Dharamatma. They will become Yudhishthir by after that time. Oh, we are clean, Mr. Clean, we are Mrs. Clean. We are just like Modi says, I am clean after killing 3,000 Muslims in Gujarat. He says, I am clean. After doing so many crimes, this study party says, I am clean. Same way they will say, we are clean. This is what has happened. Our Prime Minister is Mr. Clean, very Mr. Clean, because he is in power. And again he has come in power by legal or legal means, and I am considering, it is considered that he has come to this power abusing EVMs. Nothing else, and nothing else. Political party may understand or may not understand. People of this country may understand or may not understand. Election Commission may understand or may not understand. And I'm challenging all. Without that, this was not possible. 20 lakh machines is a big quantity, and 13 lakh machines are used in the election. And he might have used 9-10 lakh machines for replacement of those which are used in polling, and did 90% boosting on its own. And that is the only way led to this victory of BJP, mass victory, wonderful victory, which never happened before in such a free country. Unfortunately, what to say means, I do not criticize someone, but my mind doesn't stop me, doesn't control me. It says, no, Suraj, you have to speak correctly. Maybe they arrest you, maybe they abuse you, maybe you die, no problem. But I cannot digest false statements. I cannot digest conditions existing now, because I am, after all, a senior citizen of this country. I have certain duty towards this country. I have certain duty to teach juniors, to teach youth. They may accept my teaching or may not accept my teaching, but I have to do my job, because I know life. I know, I have moved in many countries. I know what countries are. People respect India there, not from today, from many, many decades back. I was in Iraq in 1981. I was in Libya in 1983.
I was in Gulf in 1985, and till many years I worked here. I know what respect we had there. Hindi, they call Hindi actually. We are Indians. In India, they call Hindian. Oh my God, you are Indian. Very nice, very good, very. You know this work, you know this work, you know this work. You know bar bending, you know survey, you know this calculations and everything and site work. And this service they praise like anything. Oh, India is India. Pakistani just respected us in a way they did not expect. They are engineers. All other countries respected us. And many Palestinian people, many other nation people used to ask me, "Oh, Suraj, if I send my kids to India, shall he speak like you are speaking? Shall he write like you are writing? Shall he work like you?" I said, of course, yes, you send. Such a high respect we enjoyed there. This was in 1980s. 81 when I was there. I was too late. People were there in 60s and 70s also. You imagine what respect we had there. People called us hard-working country. People called us English country. People called us very mindful country. People called us very sacrificing country. We fought with British. They knew very well. But now, what they call us robbing country. They call us vote robbing country. Managing countries, looting countries. Looters are there. Bank looters are there. Now, situation is changed. It's because of our citizens of this country. Again, I am telling you, we are a sleeping society. We should stop sleeping. We are sleeping because we are living in air-conditioned rooms. We are living in air-conditioned rooms that leads to sleep. We are not very good now in reading, writing, talking, interactions, understanding each other, social interactions, professional interactions, and other interactions which are required in society to develop your nation. If you go to see England, if you go to some other country, those people believe in journals, those people read notes, they read newspapers. But what we are reading, we're not, our youth are not doing all this what's got to be done. Of course, there is internet, there is web, of course, no doubt. But this doesn't mean that you don't talk to your people. You just have a girlfriend, a boyfriend, enjoy your life, or drink or something, and go to clubs and go to restaurants and enjoy your life. Doesn't mean that. We have contributed too much to pollute our air. We have contributed too much to pollute our minds. We have contributed too much to pollute our health. All we have done. We cannot walk. We cannot drive by self. We need some motorcycle or some car. Some. We cannot even go by railways. We need flight. We have become so comfortable country. We have become comfortable society. You say, I have money, I have to use. Yes, money is here. It's for good cause, not for enjoying, not for wasting. When you are using AC in your room, you are feeling very comfortable. Oh, I have AC, I am living in this 15 degrees Celsius. But you don't understand what your this comfort is contributing to air. Many times opposite is being contributed to air. Use AC, it doesn't matter. You don't if it's required to use. But have you got any solution to purify air which is being polluted? You don't have that. You have creating a problem without finding out a solution how to correct this problem. This is our problem. We are doing something, consequence of which we don't know, and we don't know how to resolve that consequences if it comes negatively. We say consequence can be positive. Yes, consequences can be positive as well. But it's not positive now. You are very well educated, of course, you are very well educated. You have degrees, you have diplomas, you have post graduations, you have doctorates, you have engineering degrees, you have medical degrees, you have chartered accountants, and so on and so forth you have. But have you thought of what contribution you can make to your country? You are not looking for job to contribute to this country. You are looking for job to survive. Oh, I am educated, I should this. We are spending millions and millions and millions in medical admission. Similarly, a million crores of rupees in engineering admission. For what? For making money out of that. Just like this election, teach a MP who is elected, you think is free? He spends at least 40, 50 crores to come designated MP of Lok Sabha because Rajya Sabha cannot allow it. So you have spent crores rupees in your election. You look for charity? You think so? You will make many times more than this in 5 years, and that is true. That is certain because you spent. Same thing applies to you professionals. You are having degrees, you are earning degrees not because you want to serve society or you want to have charity on poor. It is because you want to enjoy your life, you want to make more. And remember, our country is not end of world. It's not end. You may think for yourself only, you are not thinking for whole nation. And remember, slavery can come again.
Don't think that you are free forever. I'm warning. Slavery doesn't come from foreign nations. Slavery comes from our people itself. We are all our enemies. Once again, I'm telling you, we are all our enemies because we are wasting our resources. We are wasting our potentials. We are wasting our society. We are wasting everything that we could possess with, we could develop with. We are believing in these politicians. All politicians I'm blaming, I'm not blaming one or all. All politicians in general are enemies to this nation because they are not serving this nation. If they are spending crores of rupees in elections, this election costs about 60,000 crores rupees per records, per information. This election 2019 Lok Sabha involved expenditure of 60,000 crores in 542 constituencies, which means more than 100 crores in each constituency. Just think, if 100 crores is spent in one constituency to elect one MP, what shall be result of that? 100 crore from all parties, this means MP who wins. Well, shall that MP work for you or you work for his own? That makes a question. That raises a question. There's no need explaining all that because you can understand this simple theory. If he spends 50, 60 crores or 100 crores, shall he give you more same amount or he will take more same amount? He will make money out of that. This is very clear. Why don't you understand? Are we having some cow dung in our brain? We are having some, you can say, something else in our brain we cannot understand. Our brain works stop. We don't work. We don't think. You all think that. You are all educated people. No need explaining you all this. We cannot rely upon politicians, remember, first of all. Don't think if Modi is there or Rahul there, country is safe. No. Country doesn't belong to them, first of all. They are like us. We have to keep this country in our hands. We have to make this country safe by ourselves. We have to involve ourselves in practical politics. We cannot simply say if he is in power, we are safe. No. Nobody works for others. Remember, this is world now. All countries are changing. USA changing, China changing, Europe is changing, British is changing, Russia is changing. Which country is left that is not changing? Australia is changing, Philippines is changing, Palestine, Israel struggle has been going on, Venezuela is different, Sudan you can see, Algeria you can see. All countries are getting isolated for themselves. There was a time when they were all united in supporting each other. Now, different kind of politics has been moving around. So we are also part of same world. Sometimes we get threat from America. Sometimes we get threat somewhere else. That if you don't do this, you will not do this. If you do this, you will not do this. This is indirectly embarrassment on us. Are we going to live in embarrassed society? We always think Pakistan is our enemy. Why do we consider Pakistan as our enemy? Because there is some issue existing between two us, nothing else. Why they are a separate country? Our mind is polluted. Our minds, our youth minds, Pakistan youth minds, both are polluted. There should be no question that we are enemy of each other. There is some problem we have to resolve. Simply there is a problem between many countries which needs resolution. Now USA and China, they are fighting like enemies, but China is still in potential, is still patient, tolerant. She is digesting what US is doing, but still they are in confidence. You can take example of North Korea and South Korea. There is no single example that can be referred or cannot be referred to. We are different country. We are sentimentally moved people. We have to avoid sentiments. What happens that these politicians, particularly BJP and Modi, he is expert in sentimentalizing you, emotionalizing public. He is very successful in that. If you emotionalize people, like Indra used to do, Indra used to emotionalize, you mislead people. Yes, you are successfully emotionalized for 2-3 months, but you cannot be emotionalized forever. So Modi got success, he got a potential, he got a power, how to emotionalize people, and he successfully does that and did that. And you were used by him. In fact, if you analyze, if you go to his programs and see everything, you will find that no solution has been delivered by Modi formula, yet people are chanting Modi as if Hari Om, Hari Om, Hari Om. Really indigestible.
A man has created his Tantra Shastra on people of this country. He has brainwashed youth, he has brainwashed upper class, and he got this election that way. He brainwashed election commission, he brainwashed political parties, and he used this election to his benefit by cheating, by crime, by abusing machines, and he doesn't want to surrender. Why is he so interested in these machines through election commissioner is unclear. Machines shall not manage us. Machines shall not manage our future. Machines is not end of life. We have to change ourselves. We have to be confident. If I am a voter, I must know where my vote goes. If my vote doesn't go to which candidate I selected, my vote has gone wasted and has gone wasted this time. So we have to be careful. Forget these politicians. Think about yourself. Think where you can take this Bharat to. You have to think about this Bharat is yours, not Modi yours. Modi is human being. Rahul is also human being. They will not survive for 500 or 5,000 years. It is your future. You have to decide. Okay, you made mistake. Correct your mistake. I don't say you vote Modi or vote Rahul. It's up to you to whomever. Why don't you elect yourself? You stand election. You contest election. You win yourself. Who is stopping you? Constitutional gives every person the right to contest election. You can stand in election and win. You rule this country. Who is stopping you? Why do you depend upon someone else? If you are real patriot, if you are real bhakt of this country, win this country. Contribute to your efforts to this country. Don't depend upon job. Come on to politics and join politics. I would have joined if I was young. I'm not young now. Because that time there was no such need. I'm 65 and there's no one joining politics, active politics in this age. Maybe I die next year, who knows? There's no time limit of this life. But if you want to serve this country, join politics, join the army, join navy, join and serve. Why do you depend upon crooks? You may be angry that I'm calling crooks. Yes, they are crooks. Is there any doubt? A man who does everything to his benefit, what can you call crook? Who is responsible for these 233 criminals who join Lok Sabha? Who is responsible? You just think on that. No need of explaining everything. I'm not saying exclusively Modi is responsible. Others too are. But major portion goes to Modi's contribution. How could these parties, how could these leaders elect such negative background, black background persons to contest MPs? How? Is it not a mark? It's not a question. Who will answer this? Tell me, who will answer this? We cannot leave everything to them. This is our country. We have to be serious about this country. I used to say in every talk that we are a sleeping country. Yes, we are a sleeping country. We are non-serious country. We are not very awake country because we have no such problems. We just want jobs. Had you been, just imagine, had you been slaves today, till today of British, what would be your status? Okay, forget what Gandhi did, forget what Subhash did. What you would have done? You just think on. So imagine there has been no independence till now. We are in the same era. We are living under slavery of British. What would you have done? These are people, politicians always blame some other. Oh, he did not do this. Gandhi did not do this. Nehru would have done this or that. They just talk of nonsense. You imagine what you would have done. There was some person on net who wrote about Indira Gandhi's criticizing her in 1971 war that she released 90,000 soldiers for prisoner of wars. She did not blackmail Bhutto about giving Kashmir to exchange these people. Such stupidity exists in our writings. Such ill-qualified people are there. Such people having lack of information about anything. They just write anything. How can you blackmail some area with some POWs? Does UN Charter allow this? You have to leave them. They are prisoners of war. People don't have this sense. They just write something. Some people wrote about Dr. M.M. Singh that he attended Pakistan, some meeting, and he could inform, he could deliver whatever codes he had for these secret services. He didn't remember that ex-PM of this country is also equivalent to cabinet post, and still he is under oath. And he is guarded by SPG. SPG knows where movement is. Such stupidity exists in our minds
that we don't analyze things first. We just write anything to criticize someone without having an analytical base or no base. These are educated professional people who are born in this country and who are educated here. We don't have political knowledge, we don't have constitutional knowledge, we don't have general knowledge, and we call ourselves intellectuals. High degree of intellectuals. Really sorry for them. Without any analytical background, they talk, they write in this. They feel, they criticize. I would say, whatever has happened, happened. Take grip of this country. Don't leave this country to hands of politicians. We are ruled by constitution, and we believe to be ruled for future also by constitution. We don't want any religious involvement in this. We don't want any Vedas or Manusmriti or Quran or something else to rule us. Rule us, what don't we know? We don't know that. We have to rule in a secular way, in a democratic way, in a socialist way, etc., as defined in preambles of this constitution. That is our duty and a right as citizen of this country. Don't depend upon any politicians. Depend upon yourselves. Make yourself politicians, not in physical activities, but by virtue of understanding that you are a part of this nation. You are an honor of this nation, and politicians are your servants. Don't keep them on your head. They are not your crown. They are not your masters. You are their masters. You have made a mistake this time that you elected 233 criminals. I don't know how could you elect them. You did not even think before voting. That is problem. Means you did something against your nation. Of course, you did something by knowingly or by unknowingly or by being misled by these emotionalizing politicians like Modi or Rahul. Both emotionalized people. I don't like emotions in politics. It's question of country. It's question of Bharat's future. It's question of respect among world. World is laughing now. See what people up there, what type of people we are, what type of voters we are. You can push our country to hands of criminals. What else you see? This house is meant to catch criminals, to clean system, but they themselves are bad now. They themselves tinted. What to say about that? Who will solve this problem? Are we so stupid, weak, that we can elect such people? But we elected them. EVM elected or directly or indirectly, whoever elected, they have come to power. What solution you have? Tell me. Do you solve this? Can you? How will you solve this? Only one is throw them out of Lok Sabha. Can you? If you cannot throw them out of Lok Sabha, you are important. You are citizen of this country. You are voter of this country. You are master of this country. You are honor of this country. You have every right to fight with them. You have every right to raise your voice against these politicians, to raise your voice against the political parties, whosoever they are. If they are BJP, you have to fight with BJP. If they are Congress, you have to fight with Congress. Because we don't want criminals in our house. We must throw them out. How? You have to think that. Reject this Lok Sabha. First option is reject them. Force system. Force President. Force Supreme Court. Force Election Commission. Force political parties to reject this election 2019 if you are really patriot in this country. I don't care who wins the next election. Doesn't matter. Even if Modi comes back, doesn't matter to me. Question is, criminal should not come. Why criminal can rule us? My question is that. Why should a criminal rule us? It started from UP. Criminal chief minister is there. He waived all these cases from him. Such a greatness, you see. These will also waive all cases against them. Do you want a country in hands of criminals? You are youth. Think of this. I don't care what happens next. But you have to think. If you accept to be under rule by these criminals, thank you very much. Or congratulations for that status. Then in this way you are going to promote crime in this country. This country shall be ruled by such people, such crimes, such criminals. Good, very good. Enjoy. And if you think that this is against nation, this is a call against nation, you have to be serious. And that is what I call, we are not serious. We have to think seriously. We have to think concentrationally, with concentration. I tell Congress also, don't be open heart, close your hearts. Fight. You are also responsible to much extent than BJP because you did not fight correctly. You did not think seriously. You did not know who robber was. Still you are in same narcotism. You are not doing a service to the nation. Congress, you are a fool party now. You are a party led by foolish people. You are not that Congress which was expected to be same.
You are a Congress, People's Party. You are something else, but you are not proving that you are something else. Just doing press conferences, talking in videos, and will not serve purpose. Come on to roads, throw these 233 MPs, maybe your MPs also, they throw them out. If you can throw them, we will be with you. We reject as public person, we reject this election of Lok Sabha 2019. We don't recognize it. We don't care what EC says, what BJP says, what SC says, and what Rashtrapati ji says. We don't care about that. He might have administered oath of office, doesn't matter. We don't want bad things with us. It's bad thing. This Lok Sabha is bad, fake. I will simply say, because this election as a whole was fake, so all products of this election are fake. And we cannot digest fake. No need to talk long. I am still calling youth, have some shame on yourself. Come out of that shame. Think for nation. Think for Bharat. Think for future of yours and your kids. Think for future of your families. You want to be called a voter to elect criminals, then it's up to you. But you have done this. You have done this successfully. You did not even think of whom you are voting for. You just thought, I am voting with Modi, I am voting with Rahul, and that thought, that condemnation brought to you this hell situation. If there had been 1 or 2 MPs, nobody would care about. There are 45% MPs in criminal status. If you can accept them, it is your good will or bad will, I don't know what will I should say, but you have done that. Maybe you curse me, you abuse me, you write bad about me, you can write. You have full liberty to write that. I will not mind, because it is my country as well as your country. If you think bad for your family, think of bad. Can you think bad for your family? Can you allow some robber in your family? Even at night, some robber comes or some thief comes, tell you, allow him, come on, welcome, you are sitting here, I will food for you. Would you do that? I'll give you money, you to also. You look like a woman, go. You will not do that, because that is your personal home. But don't forget, this is also your personal home. Country is personal home as well, because if country is there, you are there. If country is not there, you will be in the hands of your slavery masters. You are in hands of British, and you are in hands of Mughals, and you are in hands of before that some others. Now you are democratic society, you are secular society, you are republic. You are taking place in place of king. That is meaning of republic. Means you yourself are king. You yourself are democratic. You yourself are voters. You yourself secular. If you are everyone, then you have to solve problem also. All problems you have to solve. Solve this problem. If you think I am wrong, you may think. Facts have to be spoken, and this is my nature. I cannot keep lies in my mind. I don't care who political party wins or who doesn't win. It is public mandate. If public wants BJP win, BJP shall win. If public wants Congress win, Congress shall win. If public wants independent should win, independent will win. It's up to them. But that should be through proper channel, through correct means. If somebody is contesting as criminal, how can you think? Maybe public don't know. Whose duty was it? His duty was for those heads of those parties to hold them, not to allow to contest, but they allowed them. Amit Shah allowed them, Modi allowed them, Rahul allowed them, Mayawati allowed them, Akhilesh allowed them, whosoever allowed them in proportion. They all are responsible for this debacle of politics. And I feel ashamed that my Lok Sabha of my country is having so many numbers of criminals. I am calling criminals because they are involved, and judiciary takes many years to decide. So, of course, they are criminals. We should say we should not wait for Supreme Court judgment comes on what happens, because something is there. There will be no smoke without fire. Just remember, something is there. So, my dear, great country, people of this country, youth, adolescents, old, young, ladies and gentlemen, educated, ill-educated, professors, doctors, all those who are in power or who are in institutions, you have a duty to think, to originate ideas from your mind, to evolve, to develop what we should do to avoid such bad existing circumstances now in this country, which have been used, which been brought to this level by all political leaders, all those leaders who do not care for country but care only for their positions, including everybody, including Prime Minister, including opposition leaders, and including everyone.
They have made this country, they have brought this country to such an interaction, such an intersection, T-section, cross-section, crossroad, from where we don't know where to go. We have to find solutions ourselves, so we can help us. We have to find ourselves. We have to find solution ourselves. If you can agree with me, it's up to you. Well, I keep speaking like that always because I am a critic of bad system. I don't care for which political party is going to rule, but if BJP comes in power by ballot papers, I'll be happy. I will not mind about that. Or if Congress comes to power, I shall also be happy. Of independent, I think I am waiting for that time when I hear the news that there are 400 people independently won in Lok Sabha. I want to see that situation that every countryman is eligible for election. Though they are eligible, but it's difficult for them to come out. For example, you may stand as youth in election to contest and you win. That is what I want to see. I don't want to see Modi or Rahul or others. This country belongs to all, and politics means person in politics. You come, serve this nation. That is welcome. Don't depend upon any political parties. Don't depend on public funding. If you can just simply get elected to Lok Sabha on your own without spending a lot of sum, that is most credibility. That is most welcome situation. That is really a credibility that you got from public. That the public honored you, respect you. If that can happen, if 400, 300 such MPs come to power from Lok Sabha, that shall be day we can say there's democracy in this country, public democracy, not political democracy. Now there's only political democracy because political parties are dominating our scenes, or elections are not public. That day when public dominates, when even a poor vendor is a such sharp person can win election, that day can be called a really public democracy. It's only political parties democracy. It's only democracy in few hands. In every party there are few hands who are manipulating people, manipulating party and coming to power. I don't want to see these parties in power, believe me, because these parties cannot be in power if people are in power. Either people are in power or parties in power. Why should people not be in power? That's a question mark. And my question is that you come to election. मेरा कहना आपसे ये है कि आप खुद आइए इलेक्शन में लड़िए, हटा दीजिए इन लोगों को, इन चोर बदमाशों को जो दो स्लेटी से जितने भी जीत के आए हैं, हमारे वोट से हमको धोखा देने आए हैं। हमने इनको वोट दिया जीतने के लिए, पता नहीं हमने क्यों दिया इन चोरों को वोट। वोट को इसलिए दिया गया कि हमने इनके नाम पे वोट दिया ही नहीं। हमने वोट दिया तो मोदी के नाम पे दिया, राहुल के नाम पे दिया। जो हमसे गलती हुई है उस गलती को हमें सुधारने के लिए आगे आना होगा। अगर भारत का युवा, भारत का जिम्मेदार नागरिक इस कायदे में आगे आता है कि इनको हटा दीजिए, इनको इस बीमारी को अभी से हटा दीजिए ताकि बीमारी आगे और प्रॉब्लम न ले ले, तो आपको आगे आना चाहिए। ये आपका कर्तव्य भी, यही देशभक्ति है। मोदी चिल्लाने से देशभक्ति नहीं होती है, कांग्रेस को बुरा कहने से देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति आपके कर्मों से होती है। अगर आप चाहते हैं देश अच्छा बने, भारत अच्छा बने, भारत का नागरिक जाके भारत का गरीब से गरीब इंसान भी इलेक्शन में आए, चुना जाए, और वही देश का दिन असली होगा। जब हम चाहेंगे कि 300-400 ऐसे उम्मीदवार जीत कर आ गए जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उस दिन हम कह सकते भारत जीत गया, भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, भारत में डेमोक्रेसी सफल हो गई, लोकतंत्र सफल हो गया। भारत किसी में निर्भर नहीं है, क्योंकि भारत राजनीति वालों पर निर्भर नहीं है। और राजनीति का दूसरा नाम आज के समय में चोरी और डकैती ही होता है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम नहीं होता है। हमें अपने आप को संभालना चाहिए। अगर आप नहीं संभाल सकते तो हम अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। हमें अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, सबको संभालना होगा, नहीं तो हम क्या कहेंगे अपने आप को, हम नहीं समझते। अगर युवाओं से मेरी अपील है, अगर आप इतनी बात मेरी समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मत याद रखिए कि मैं किस पार्टी का हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैंने लोगों को सुनता है, मैंने पढ़ा है जो मेरे बारे में जो भी कमेंट्स लिखते हैं कि ये कांग्रेस का है या उसका है। भूल जाइए, मैं किसी का नहीं हूँ, सच तो यही है। इससे ज़्यादा मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता। मैं भारत का नागरिक हूँ और रहूँगा, जब तक जिंदा हूँ रहूँगा। भारत के बारे में बात करूँगा, भारत के बारे में बात अच्छी हो या ख़राब हो, बात करूँगा, खुल के करूँगा। कुछ मुझे छुपाना नहीं है। आप भी राजनीति में आएंगे तो मैं आपकी भी तारीफ करूँगा, आप भी कुछ करके दिखाएंगे तो आपकी भी तारीफ होगी, अच्छी तरह से होगी। लेकिन आप में दम नहीं आगे आने का, आप में ताकत नहीं आगे आने की। अरे कम से कम बोलिए तो सच, किसी की चमचागिरी तो मत करिए, किसी के पीछे तो भाग के आगे नहीं निकलिए, अपने दम पे निकलिए। क्यों चाहते हैं किसी नेता के पीछे लघु बनना? उस नेता ने आपको क्या दिया है जो उसके पीछे लघु बनते हैं आप? मेरी बात ये समझ से बाहर है। क्यों किसी के नेता के पीछे जाया जाए जब भी आप स्वयं नेता बन सकते हैं? उन नेताओं के बाद ऐसा क्या है कि आप उनके पीछे जाते हैं? आप स्वयं क्यों नहीं देश को चला सकते? प्रश्न ये उठता है। आप चलाइए, संविधान आपको पावर देता है, आपको हिम्मत को आगे आइए, किसी के पिछले को मत करिए। और ये मत समझिएगा कि आप नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भारत हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत देश आपका है, आपका उनका सबका जो है रहते हैं। आपको कष्ट उठाना होगा अगर इस देश की किस्मत को सुधारना है।
आपको आराम जिंदगी से थोड़ा बाहर आना होगा। आपको कुछ करना होगा, कुछ खोना या पाना होगा। अगर आप कुछ खोना पाने के लिए तैयार हैं तो आप इस देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं आप भी नहीं जानते। लेकिन ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं या सत्ता के विरोध में बैठे हैं, ये इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। इनमें दम नहीं लड़ाई करने की। जो सत्ता में आ गया वो अपने आप को समझता है कि मैं यूँ, सत्ता में नहीं आया वो कहता है कि मैं इनसे कैसे लड़ूँ। इन दो बातों से देश नहीं चल सकता। हमें देश को चलाने के लिए यही होना पड़ेगा। आज देश का हालात अच्छा नहीं है, आपको समझना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आज देश का नागरिक खुश नहीं है। देश का नागरिक वो सब नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए। देश में बहुत बुरे हालात हैं। इसको संभालने के लिए हमको सबको आगे आना होगा। हमें किसी नेता पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि नेताओं पर निर्भर कमजोर वक्त के लोग रहते हैं। नेताओं पर निर्भर होते हैं जिनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती। पढ़े लिखे लोगों को तो खुद पॉलिसी बनानी होगी। आप क्यों चाहते हैं कि आप किसी नेता के पीछे जाएं? आप खुद बनिए नेता, लड़िए समाज से, लड़िए संगठनों से, लड़िए देश से, सबसे लड़िए और देश को आगे निकालिए। अपने घर में भी तो आप ऐसे करते होंगे, अपने भाई बहनों से बहस करते होंगे, अपने माता पिता से बहस करते होंगे, अपने बूढ़ों से बहस करते होंगे, तो यहाँ क्या दिक्कत आती है आपको? बस मैं सिर्फ ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए फिर यही अपील करूँगा कि आप मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी, मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और ना होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी के लिए ना मरा हूँ ना जीऊँगा। मेरा प्रिंसिपल है कि दुनिया में मैं आया हूँ, भारत के अंदर इन लोगों के लिए नहीं आया हूँ कि हर बार मैं 5 साल में इनको वोट दूँ और फिर आ जाऊँ। मैं इस बात के लिए भारत में जन्म नहीं लिया है। मैं भारत को अच्छा देखना चाहता हूँ, और मैं इन लोगों को नहीं चाहता जो राजनीति का मैनिपुलेट करते हैं, उसमें चाहे कोई भी हो। कांग्रेस वालों ने भी किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा इस बात से, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का मतलब एक ही होता है, किसी भी तरह से सीट को बचाना है, सत्ता में रहना है। और सभी राजनीतिक पार्टियों से है, वो कैसी है क्या नहीं, मुझे कोई व्यक्तिगत लेने से मतलब नहीं है। आज जो सत्ता में नहीं है उनका आशा है कि सत्ता में रहेंगे आने वाले समय में, और जो सत्ता में है वो छोड़ते हैं कि हम छोड़ के जाएंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। जब ऐसी बातें देश में हो जाए, अरे याद रखो इंग्लैंड को डेविड जो था प्राइम मिनिस्टर, जब ब्रेक्सिट के रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आए तो छोड़ के चला गया। आज देखिए मे को देखिए, थेरेसा मे वो छोड़ के जा रही है। इसको कहते हैं कैरेक्टर, इसको कहते हैं चरित्र। हमारे देश में तो उल्टा है, एक बार सीट मिल गई तो मेरे बाप की, मेरे दादा लाई जायदाद है, मेरे पूर्वजों ने मुझे दी है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। यह उल्टी सोच है। अरे आपके बस का नहीं है तो छोड़ के जाइए, कोई दूसरा बैठेगा, आपके बस का नहीं चलाएगा उसको, आप क्यों उस पर चिपकना चाहते हैं? लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होगा। हमें चाहे ईवीएम की हेराफेरी करनी पड़े, हमें चाहे वोट को चोरी करना पड़े, वोट पे डकैती डालनी पड़े, हमें इलेक्शन कमीशन को गुलाम बनाना पड़े, हमें चाहे जो भी करना पड़े, हेराफेरी, यदा क्या कहते हैं उसमें, साम दान दंड भेद, कुछ भी करना पड़े, हम सीट छोड़ेंगे नहीं। हमारे हाथ में बड़ी मुश्किल से आई है। सोच अगर ऐसी हो जाए तो क्या होगा देश का? मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं अपने को पाने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। You are ready to go to whatever extent is possible to reach by whatever means and by the hook and crooks when you want to have seat forever. You do not want to sacrifice seat. You are not like those people like England. You can take example of David Mayer and David and Theresa, who have left seats just to, because people did not vote for them and they were not happy with this. They could not solve this problem, so they have gone. But we can never go, because this is our father's property, this is our grandfather's property, it's my patent. We cannot leave this property because this is mine and all of this. This thinking is helpless, really. This thinking is giving us a negative boost that what political system is this, and why we are not moving further. And we keep on talking, you take to each all the day, bakwas all these TV channels are doing. They're all purchased channels by Modi. All day their only target is Modi, Modi, just keep sounding Modi, Modi in everything, Modi, Modi. And that is really foolishness, believe me. If they think by doing so they can move their channels, they are wrong conception. They have to show programs, country's development. Other they are not doing that. They are just keeping everyday talk, same talks and different modes, which is really not benefiting this country. They are indirectly looting this country, harming interests of this country, interests of youth, interests of old people, interests of senior people. And I don't want to lose the interest of those people. I think people should stay comfortably well with expectation of having good future and good future in coming times. But this is not happening. I am not talking too much to you. You may think I'm talking too much. I'm just talking point to point, but what I have in my mind, in my heart, concealed, I want to express that to you. Maybe you have beat me, you abuse me, you talk bad about me. I don't care for that. Whatever I had, I expressed. I'll keep talking to you also in future.
I will do everything possible for me to serve you people in talking, in providing information, in thinking and contemplation, because contemplation and thinking are very important in this life. If you cannot think and contemplate on various issues of this life related to this country and to people of this country, you cannot do well for this country. We have to worry about this country. We have to think of our people first and not political parties first. We have to think for good economy of this country. We have to think for good system of this country. We have to see this our 51 article continues that we develop scientifically, professionally, and everywhere we develop. We think that we should have our duty to. We think that we should have our rights to, but we don't think we have rights or duty in aligned with it. If you are thinking of rights, we should do our duties too, which you are not doing. Article 51 says scientifically we have to advance, we have to take this country to heights which we are not taking. We are just stopping everywhere by stupidity, by stupid words, by baseless words and sentences. But I should say that I will not take much time. If you can understand me, if you think that I am not bad, if you think I am not politically oriented, you can talk to me, you can understand me. And if you think no, it's congressman, then it's up to you. You can think whatever you want. You are free. You are free like I am free. You can write anything to me, no problem. I don't mind about that. But clearly, I am telling you, I am a citizen of this country, not a politician of this country. But I want to cut politicians. I want to hit them because they are looters of this country. It may be Congress politician, it may be BJP politician, someone else. They all travel in same boat. I cannot spare them, but I expect something from some people that they have to save this country because they liberated this country. And these people looted this country. They got this country by cheating, and they don't want to replace this management. They just want to continue this way by hook or crooks. That is the only difference of understanding. Congress is a responsible party. It has to behave responsibly. They are not behaving so far. They are not conducting. Since the day they lost election, they are dead. I don't know why they are dead. They have lost election, not life. They have not lost country. They have not lost public. They should do their duty to save this country from this looting hands of these politicians who are BJP now. If it's 230 people is an example. It's an example how these politicians are. There's no other need. There's no other evidence required to prove what politics is now. 45 people, 45% looters are MPs. Shame on you and shame on me, really. I am feeling ashamed. If you are, I don't know you are feeling ashamed or not. I am feeling ashamed in my country. I am feeling ashamed in this world. And those political parties are not feeling ashamed, unfortunately. BJP is not feeling ashamed. Prime Minister is not feeling ashamed. Rashtrapati is not feeling ashamed. They are happy. Oh, we have won it. You brought 233 criminals to politics, to Lok Sabha, and you are showing your power. Take out these 233 people and throw them into dustbin. If you are really patriot, if you are really Deshbhakt. Otherwise, you are same as they are. Thank you very much. Goodbye. There's no difference between them and Mr. Modi. You are no more Modi. You are just a criminal Modi now because you supported them. You supported them in elections. Thank you very much. Goodbye.